Welcome to the geography class bete. Today we will discuss about the unit number 3 exercise part C. Which of these places do you think has the lower air pressure and why? आपके दो places दी गई हैं. The top of the mountain K2, this is first one, and second one is the beach near Karachi. आपको बताना होगा कि दोनों में से कहाँ पे एयर प्रेशर जो है वो लोअर होगा. बेटे माउंटेन K2 का जो टॉप है वो हायर एलिवेशन पे लोकेटेड है और बीच नियर कराची जो है वो लोअर एलिवेशन पे लोकेटेड है. और हमें पता है, हमने ड्यूरिंग रीडिंग ऑफ एयर प्रेशर रीड आउट किया था कि एट द टॉप जहाँ पर लेस एयर होगी वहाँ पर एयर प्रेशर भी कम होगा. सो एयर प्रेशर विल बी लोअर एट माउंटेन K2 एज़ कम्पेयर टू द बीच नियर कराची. The air pressure is lower at the top of the K2, which is at very high elevation, because there is less air above the top of K2 than there is above the beach of Karachi, which is at very low elevation. Next part C2 है. Which direction are these winds coming from? आपके पास ऊपर एरो से लगा है, आपने उसकी डायरेक्शन देख के बताना है कि ये विंड कहाँ से आ रही है बेटे. So the tail of the red arrow will indicate the direction of the wind. Tail is towards the north. So in part A, the wind is coming from the north side. Let's move towards the part B. The arrow is between the north and west, as you can see. So the wind direction will be northwest. Part C, as you can see, the wind is coming from the south. So the means के the tail of the arrow is towards the south. So the wind direction will be south. Next, the tail of the arrow is pointing towards the southeast. So in that picture, exercise part C2D, the wind will be the southeast wind. Now exercise part for solving 3C, we have to refresh our knowledge that this single half line will be equals to 5 knots. This line will be equal to 10 knots. This will be equal to 50 knots, and this will be equal to 100 knots. यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह हम नॉट्स कैलकुलेट करते हैं. दिस विल, एज यू नो, हमने यहाँ पे देखा, दिस विल इक्वल टू 50 knots 50. दिस फुल लाइन मीन 10 knots 60 हो गया टोटल. दिस मीन 70, एंड देयर इट मे ऐड 5 knots. सो यहाँ पे विंड स्पीड क्या होगी 75 knots, एंड बिकॉज इट इज़ टूवर्ड्स द ईस्ट, सो द डायरेक्शन विल बी द ईस्ट. लेट्स सॉल्व पार्ट ए बेटे. दिस विल इक्वल्स टू 5 knot, and this is north, this is south, this is west, and this is east. So wind speed will be 5 knots, and what will be the direction? अब direction note करें तो it is between the north and east. So the direction will be north and east. B part अगर हम solve करें, same तरह directions लिख रहे हैं सब students. I hope आप सब ने write कर ली होंगी. बेटे देखें, हम सब ने अभी रिफ्रेश योर नॉलेज जब हमने देखा था तो हमने देखा कि दिस इज़ इक्वल्स टू 50 knots. द स्पीड विल बी ऑफ दिस विल बी 50 knots, एंड डायरेक्शन विल बी, बिकॉज इट इज़ बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, सो द डायरेक्शन विल बी साउथ वेस्ट. पार्ट सी में अगर आप लोग ऑब्जर्व करें, सब डायरेक्शंस लिखें और वीडियो पॉज करके ख़ुद से इसके डायरेक्शन और विंड स्पीड फाइंड आउट करें. तो आई होप आप सब ने बेटे फाइंड आउट कर ली होगी. अकॉर्डिंग टू दिस द डायरेक्शन इज़ साउथ, एंड द विंड बार्ब्स विल बी 45. विंड जो नॉट्स हैं विल बी इक्वल टू 45 knots. सो द विंड स्पीड विल बी 45. इन द नेक्स्ट डायग्राम भी वीडियो पॉज करें जल्दी से सब स्टूडेंट्स, और जल्दी से इसकी डायरेक्शन और जो है इसकी स्पीड फाइंड आउट करें. ओके, वेरी गुड. आई होप कि आप सब ने कर ली होगा बेटे. Speed is 65 knots, and the direction is northwest, because it is located between the north and west. This is west, this is north, this is east, and this is south. It is located between north and west, and 50 for this knot, 10 for this knot, and 5 for this knot, and total हमारे पास हो गया 65. So the speed will be 65 knots, and the direction will be northwest.
आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग है, समझ आया होगा। आप ख़ुद से भी डिफरेंट जो हैं कुछ भी बैठे नॉट्स ड्रॉ करें, विंड बॉब्स बनाएं, उस पर नॉट्स बनाएं, उनकी डायरेक्शंस और इस तरह से फाइंड आउट करें। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच।